Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 40 of our daily current affairs initiative, where we bring to you questions from current affairs which are important for all your competitive exams. This video contains 20 questions because yesterday was an off. So, without further ado, let's move to question 1. Where was India's first nano electronics roadshow held recently? हाल ही में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहां आयोजित किया गया? Today's questions are very factual mostly, and the right answer for the first question is IISc Bengaluru. Question 2. Where was the 8th state level coordination committee meeting conducted by RBI held? RBI द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक कहां आयोजित की गई? Again, a factual question. What do you think is the right answer? The right answer is Gangtok, Sikkim. Question 3. Which country became the world's second largest tea exporter in 2024? कौन सा देश 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन जाएगा? The second largest tea exporter. Right answer is India. The first position is held by Kenya. A very unexpected answer, but it's true. Kenya is the largest tea exporter in the world, and the second place was long held by Sri Lanka. But now India has replaced Sri Lanka and become the second largest tea exporter of the world. Question 4. When did the second Khelo India Para Games 2025 conclude? दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन कब हुआ? 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स ended or concluded on March 27, 2025. Question 5. What was the magnitude of the earthquake that struck Myanmar on March 28, 2025? 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप की तीव्रता क्या थी? The magnitude on the Richter scale of the Myanmar earthquake was 7.7. Basically, Myanmar as well as Thailand felt the earthquake shocks, and there has been huge loss of life and property here. And India has started Operation Brahm to help and send humanitarian aid to Myanmar and Thailand after this earthquake of 7.7 Richter scale. Question 6. NTTM has completed 5 years in 2025. With which of the following is it associated? NTTM को 2025 में 5 साल पूरे हो जाएंगे. यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? Deliberately, the abbreviation is given and not the full form, because the right answer here is Technical Textiles Industry. The NTTM stands for National Technical Textiles Mission, and it has completed 5 years. You could have also guessed it, क्योंकि 2 बार T जो है वो सिर्फ 4th ऑप्शन में ही आ रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में. क्वेश्चन नंबर 7. How much does the Indian government plan to borrow in the first half of financial year 26? वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में भारत सरकार कितना उधार लेने की योजना बना रही है? As I said, factual questions today. The plan to borrow for first half of financial year 26 is of rupees 8 lakh crores. Question 8. Recently, the Indian government has discontinued the gold monetization scheme. When was it launched? हाल ही में भारत सरकार ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को बंद कर दिया है. इसे कब लॉन्च किया गया था? The year when it was started. Gold monetization scheme. It started in the year 2015, but now it has been paused. Question 9. What is the primary purpose of digital crop survey system recently launched by the Ministry of Agriculture and Farmers? हाल ही में कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई
डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What does it aim at? The digital crop survey system. The right answer is collecting real-time crop data for accurate production estimates. Again, you could eliminate predicting of weather conditions क्योंकि उसका digital crop survey से ज़्यादा लेना देना नहीं दिखाई देता. Similarly, distribution of fertilizers भी एक probable answer नहीं है यहाँ पर. Monitoring of irrigation facilities, अगर ऐसा कुछ होता तो वो भी नेम में मेंशन होता. हियर क्लियरली वी आर मेकिंग अ सर्वे ऑफ क्रॉप्स डिजिटली, सो द राइट आंसर इज कलेक्टिंग रियल टाइम क्रॉप डेटा. क्वेश्चन 10. हु इज द करंट पर्पल कैप होल्डर इन आईपीएल 2025? आईपीएल 2025 में वर्तमान पर्पल कैप धारक कौन है? विच प्लेयर इज द करंट पर्पल कैप होल्डर इन आईपीएल 2025? द राइट आंसर इज शार्दुल ठाकुर. और ये जो पर्पल कैप है, क्रिकेट लवर्स कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि किस खुशी में इनको दी जाती है. A small disclaimer, only one day is left when the CUET target crash course begins on the 1st of April. तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए. इसकी कोर्स की वैलिडिटी जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते CUET के मई 2025 तक रहेगी. The subjects that are offered are clearly mentioned here. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं. प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा एंड फ्री मॉक टेस्ट्स मिलेंगे. PYQ डिस्कशंस भी होंगी एंड एग्जाम सक्सेस स्ट्रेटजीज भी डिस्कस की जाएंगी. द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन हियर एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज in the comments. Also, our 2 offline branches are in Uttam Nagar and Guru Har Kishan Nagar. तो जल्दी से enroll कर लीजिए. Moving back, question 11. What is the theme for this year's International Day of Zero Waste 2025, which will be observed on March 30? इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 का विषय क्या है जो 30 मार्च को मनाया जाएगा? International Day of Zero Waste. The question can also be asked कि वो कब मनाया जाता है. Answer would be March 30th. And this time the theme is towards zero waste in fashion and textiles. Question 12. Which city has overtaken Mumbai to become Asia's billionaire hub according to Hurun Global Rich List 2025? Hurun Global Rich List 2025 के अनुसार कौन सा शहर मुंबई को पीछे छोड़कर एशिया का अरबपतियों का केंद्र बन गया है? The maximum billionaires live in the city now, overtaking Mumbai. The right answer is Shanghai in China. Question 13. In which IIT did CDS General Anil Chauhan inaugurate Tech Kriti 2025, Asia's largest intercollegiate technical and entrepreneurial festival? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किस IIT में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया? In which of the IITs has CDS inaugurated Tech Kriti 2025? The answer is IIT Kanpur. Question 14. Who has been appointed as the brand ambassador of L&T Finance Limited? L&T Finance Limited का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? Which of these cricketers have been appointed as the brand ambassador of L&T Finance Limited? The answer is Jasprit Bumrah. Question 15. What recognition did Punjab and Sindh Bank receive in the Ease 6.0 reforms index recently? हाल ही में ईज 6.0 सुधार सूचकांक में पंजाब एंड सिंध बैंक को क्या मान्यता मिली है? The type of recognition that has been given to Punjab and Sindh Bank is the Top Improvers Award. Question 16. Where will the 14th edition of the Indra bilateral naval exercise between India and Russia take place? भारत और रूस के बीच इंद्र द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा?
The question can also be asked, the bilateral exercise Indra is between which two countries? The answer would be India and Russia. And this time it is being organized in Chennai. Question 17. Masaki Kashiwara has been awarded the 2025 Abel Prize for his contributions to which field of mathematics? मसाकी काशीवारा को गणित के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2025 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? What is his contribution in the mathematics field? The right answer is algebraic analysis and representation theory. Question 18. What did Union Minister Amit Shah recently announce regarding an app-based taxi service operating under a cooperative framework to empower drivers as stakeholders? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ड्राइवरों को हितधारकों के रूप में सशक्त बनाने के लिए सहकारी ढांचे के तहत संचालित ऐप आधारित टैक्सी सेवा के संबंध में क्या घोषणा की है? By what name a scheme is being launched for the taxi drivers? The answer is Sehkar. The launch of Sehkar. Sehkar is an app-based taxi service operation जिसमें कि स्टेक होल्डर्स बनाए जाएंगे ड्राइवर्स और उनको एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में बांधा जाएगा. जैसे कोऑपरेटिव्स काम करते हैं आपस में, वैसे टैक्सी ड्राइवर्स को भी एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में बांधा जाएगा. Question 19. India's core sector growth slowed to 2.9% in February 2025. Which sector had the highest annual growth during this period? फरवरी 2025 में भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि धीमी होकर 2.9% हो गई. इस अवधि के दौरान किस सेक्टर में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि हुई? Although there has been a slowdown, but the largest growth has been seen in the sector of cement. Last question of the day. Who has been elected as the new chairman of IBA, Indian Banks Association, for the upcoming fiscal year? आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? The new chairman of IBA. And the right answer is Challa Srinivasalu Shetty. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these question answers and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.